हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रामेड पैटर्न्स। मेरा नाम दीपा जादव है और आज हम सीखने वाले हैं अ चार्जर पाउच। तो ये चार्जर पाउच के मैंने काफ़ी सारी रिटर्न गिफ्ट्स के ऑर्डर लिए हुए हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल पाउच, लेकिन इसमें चार्जर बहुत आराम से बैठ जाता है। कोई भी साइज़ का चार्जर हो, ओके, तो वो उसमें बैठ जाता है। एंड यू कैन ट्राई इट इन डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग दिस नाउ। ये चार्जर पाउच बनाने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे हमारा पैटर्न पीस। ओके, तो हम यहाँ पे 8 इंचेस मार्क करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कोई एक पेम्पलेट ले लिया है, पेपर ले सकते हैं। सो आई हैव 8 इंचेस एंड द विड्थ विल बी 10.25, ओके, 10.25, 10 इंचेस एंड 1/4 यहाँ से। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ माय इस तरह से। नाउ आई विल टेक वन ऑफ माय पेपर सिजर्स एंड कट दिस लाइंस। तो यहाँ पे मैंने ये कट कर लिया है अपना पीस। नाउ मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया है ऑफ 2.34 इंचेस। ओके, आई एम गोइंग टू प्लेस इट एट ऑल कॉर्नर्स एंड मार्क। ये देखिए इस तरह से। नाउ आई एम गोइंग टू कट आउट द स्क्वायर्स दैट वी जस्ट कट। तो जब ये कट हो जाएगा तो हमें ये पूरा ढांचा मिल जाएगा हमारा। ओके, सो इस तरह से हम गोइंग टू कट ऑल द बॉक्सेस आउट। तो यहाँ पे मैंने अपना ये पैटर्न पीस कट कर लिया है। अभी इसी साइज से मैं एक फेल्ट का शीट और 2 इंटरफेसिंग का पीसेस कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 2 इंटरफेसिंग का पीस और एक फेल्ट का पीस कट कर लिया है। नाउ लेट अस इंटरफेस दिस। तो मेरा ये पाउच बनाने के लिए मैं लेने वाली हूँ ये वाला फैब्रिक अजरक का फॉर माई फ्लैप, और ये अजरक का पोल्का डॉट वाला फॉर द बेस। सो लेट अस स्टार्ट बाय इंटरफेसिंग द बेस। सो आई एम गोइंग टू स्प्रेड इट लाइक दिस एंड फर्स्ट रिमूव ऑल द क्रीज। तो यहाँ पे मैं ये पूरा क्रीज जो भी है वो हटा रही हूँ। ओके, अपना इंटरफेसिंग का एक पार्ट लेके आई एम गोइंग टू अटैच लाइक दिस। लीव अ लिटिल स्पेस हियर। ओके, here. Let's interface this now. यहाँ पे ही मैंने इंटरफेस कर लिया है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे अराउंड हाफ इंच, हाफ इंच, हाफ इंच एंड हाफ इंच हम छोड़ेंगे। साइड्स वी आर गोइंग टू कट अलोंग द इंटरफेसिंग लाइन। ओके, बट ऑन द एज हियर आई एम गोइंग टू कट एक्स्ट्रा इस तरह से। That's the same thing I'm going to do this side as well. Do not forget this part, okay? Here, let's give it one ironing again. इसी तरह से मैं अपना दूसरा पीस भी इसी फैब्रिक से कट करने वाली, क्योंकि मेरा लाइनिंग और एक्सटीरियर बेस दोनों यही फैब्रिक के होने वाले हैं। सो देयर यू हैव इट, वन पीस डन। नाउ आई एम गोइंग टू इंटरफेस द सेकेंड पीस। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना ये दोनों पीसेस इंटरफेस कर लिया है और आई हैव लेफ्ट हाफ इंचेस ऑन ऑल 4 sides. Okay, this is done. Now let us work on our flap pieces. अभी ये फ्लैप बनाने के लिए हमें 2 इंटरफेसिंग के पीसेस लगने वाले हैं, which is 5 inches by 5 inches. ये जो फेल्ट का पीस है,
ये जो फेल्ट का पीस है दिस इज़ 5 इंचेस वाइड, ओके, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट है, ओके, इट्स हाफ इंच शॉर्ट फ्रॉम हियर, सो दिस विल बी 4.5 इंचेस बाय 5 इंचेस, ओके. सो लेट्स इंटरफेस दिस नाउ. तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पीसेस इंटरफेस कर लिए अपने, ओके. हमें लगने वाला है एक मैग्नेटिक स्नैप. जो मैं यूज़ करती हूँ ये स्नैप वाला मैग्नेटिक बटन यूज़ कर रही हूँ मैं, ओके. आप रेगुलर मैग्नेटिक स्नैप या स्नैप बटन या प्लास्टिक के स्नैप बटन, वेलक्रो बटन एंड हुक, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू इंटरफेस दिस पीसेस. तो यहाँ पे मैं अपने फेल्ट को ओनली फ्रॉम टॉप पार्ट, क्योंकि आई डोंट वांट इट टू ओपन अप, आई एम गोइंग टू इंटरफेस दिस पार्ट हियर. सो आई विल टर्न इट अराउंड, प्लेस इट लाइक दिस, एंड ये जो डबल साइडेड फ्यूज़ रहता है ये बहुत पतला सा रहता है, अमेज़ॉन में ईजीली मिल जाता है. जस्ट गोना कट वन पीस, प्लेस इट हियर, क्योंकि बाकी के 3 साइड्स आई एम गोइंग टू स्टिच. I'm just going to do it like this and interface it. ये देखिए यहाँ पे ये चिटक जाता है. Now I'll just clip this part and I'll stitch and work on this later on. Now coming to this part, okay, ये थोड़ा सा folded है देखिए, क्योंकि मेरा felt folded था. You just iron it out and the fold or the crease goes away. Now I'll take one of these pieces. Again I'm going to do the same thing. Keep it like this. Take it the other way around. And I'm going to take pieces of this. Place it here. Interface. इसी तरह से मैं बाकी के 2 साइड्स भी अभी इंटरफेस करने वाली हूँ. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे फ्यूज़ कर दिए अपनी फेल्ट को. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टिच द साइड्स हियर. उसी तरह से मैंने अपने फेल्ट का जो पीस है उसे भी यहाँ पे 3 साइड से स्टिच कर लिया है. यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी फ्यूज़ किया हुआ था, सो दैट्स डन. नाउ लेट्स वर्क ऑन द लाइनिंग. तो ये मेरा लाइनिंग का पीस है. मैंने यहाँ पे लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डिटेल. व्हेन द फ्लैप ओपन्स आई वांट द फ्लैप टू लुक लाइक दिस. ये जो भी डायरेक्शनल प्रिंट है शुड गो अप. There is no harm, you can still have it this way, but it's just that I like it this way. A small detail, but pay attention to it. So क्योंकि ये ऐसे आएगा तो मेरा बेस लाइन यहाँ पे आएगा. So that's why I have drawn of 1/4 inch from the edge a straight line. Okay, फिर half inch I have drawn one line, और जो कि मेरा width होगा flap का 4 inches. So I've marked 4 inches and drawn the second line. फिर यहाँ पे 3/4 इंच फ्रॉम द बेस लाइन मैंने यहाँ पे इसका सेंटर मार्क किया हुआ है.
ओके यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक स्नैप एट दिस पॉइंट लगाते हैं तो पुट वन साइड ऑफ द मैग्नेटिक स्नैप हियर, ओके, बट सिंस आई एम गोइंग टू डू द पंचिंग वाला आई विल डू इट लेटर ऑन. नाउ आई एम गोइंग टू होल्ड दीज टू पीसेस लाइक दिस. So my flap piece, I want to make sure it is correct direction, and now I'm going to stitch this. ये देखिए ये मैंने 3 साइड स्टिच कर लिया है. I'm going to cut all the excess fabric now. And turn it around. After turning, just give it one slight ironing. जैसे मैंने आपको मिनी वॉलेट में एक्सप्लेन किया था कि इफ़ यू हैव पुट अ मैग्नेटिक स्नैप यहाँ पे, डोंट आयन ऑन दैट पार्ट अदरवाइज इट शाइन्स हियर. ओके, सो बी केयरफुल ऑफ दैट. बट हियर आई एम गोइंग टू गिव माई फ्लैप एन आयनिंग नाउ. सो यहाँ पे मैंने ये पीस आयन कर लिया है. आई एम गोइंग टू टॉप स्टिच नाउ. ये देखिए इस तरह से आई हैव स्टिच दिस पार्ट. नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ पुट द स्नैप बटन. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना ये मैग्नेटिक स्नैप लगा दिया है. तो अगर आपको ये कैसे लगाना है इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो वो रामेड अड्डा एपिसोड 4 में मैंने एक्सप्लेन किया है. यू कैन गो एंड चेक दैट. द नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी पुटिंग दिस इंटरफेसिंग. सो आई एम गोइंग टू मार्क यहाँ from this point 2 and a 1/4 from the edge. Okay, let's mark 2 and a 1/4 and take the center of my piece इस तरह से. Now place this here, mark इस तरह से. टेक योर सिम रिपर एंड विथ कंट्रोल्ड फोर्स कट. ये देखिए इस तरह से. Now we will start stitching this. So I'm going to make sure my felt is aligned इस तरह से. and अगर आपको straight line नहीं जम रहा है, there is no problem at all. Just draw a line like this around 1/4 inch from the edge and you're going to stitch. अभी इसी तरह से आई एम गोइंग टू जॉइन ऑल द 4 पार्ट्स, मेक दिस कंप्लीट. और इसी तरह लाइनिंग के भी पार्ट्स में जॉइन करके स्टिच करूँगी. ये देखिए यहाँ पे मैंने ये चारों साइड स्टिच कर लिए हैं और जो भी एक्सेस फैब्रिक था वो ट्रिम कर दिया है. रिमेंबर नॉट टू कट टू क्लोज टू द स्टिच लाइन. नाउ लेट्स टर्न आवर पीस अराउंड. ये देखिए. Okay, now this is how the flap will come here पे, like this. So that's what we will do before we stitch this. I have also stitched the lining का piece. Okay, remember when you are stitching the lining piece, try and make sure the interfacing points are aligned when you are stitching. तो मैंने ये stitch कर लिया है और cut भी कर लिया है. So let us stitch this piece now. I'm going to make sure that my piece is exactly at the center of it. Okay, place a clip here
and this will be, the felt line is going to be a stitch line. Okay, it has started raining. तो ये देखिए, ये हमारा फ्लैप लग गया है अभी. Now for the next step we are going to iron. तो ये जो लाइनिंग का पीस है, we are going to fold it like this and just give it one little bit of ironing. ये देखिए, ये इस तरह से just fold it along and iron. Like this. Okay, while I'm at it, I'm also going to give this piece a slight ironing. Okay, now let's assemble this. तो यहाँ पे मैं अपना ये वाला पीस लूँगी लाइनिंग का. I'm going to insert it like this. Okay, this is exactly like how we did the makeup pouch now, but instead of a zipper, now we have a flap here. So align the seam edges, clip it. Okay, so we folded all the other sides. For this side, I'm just going to hold it like this and take it to the sewing machine. This is little tricky and will need practice. Okay, ये देखिए इस तरह से. Now I'm going to take it and start stitching. Okay, I'm going to move the lining raw edges inside and top stitch. ये देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा स्टिच कर लिया अपना पीस. ये देखिए हमारा ये क्यूट सा पाउच तैयार होके रेडी है with clean lines all around. Okay, so when you have to carry your charger, all you have to do is keep it inside, fold it, push it and close it. There we have our charger pouch ready. तो ये रहा हमारा चार्जर पाउच. ओके, सो प्ले विद कलर कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट टेक्सचर्स, एंड डू ट्राई दिस एट होम. एंड इफ you are making and posting on social media, please tag me on #RamMade. I would love to see what you have made. So go ahead and try this now.